So now we'll see how to create a new presentation. नवी presentation ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ create ਕਰਦੇ ਹਾਂ? So create ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ file menu ਨੂੰ click ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ office button ਹੁੰਦਾ ਹੈ, office button ਨੂੰ click ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ new option ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, new option ਨੂੰ click ਕਰਕੇ drop down menu ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ blank presentation ਦਾ ਇੱਥੇ display ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ select ਜਾਂ ਫਿਰ available templates and themes ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ theme ਵੀ select ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਜਿਹੜੀ available templates and themes है इन्हां ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ blank presentation create कर ਲਈ है ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ theme ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ use कर सकते ਹਾਂ। फिर create button ਨੂੰ click कर देना है, supposing ਆਪਾਂ blank presentation ਲੈ ਲਈ, फिर create button ਨੂੰ click करके ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फिर slide displays a rectangular dotted rectangular boxes with called placeholders। so ਇੱਥੇ placeholder ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ display ਜਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ blank presentation ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ default settings ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ text and color ਦੀਆਂ। black color ਦਾ text ਹੁੰਦਾ ਤੇ color ਉਹਦਾ background white ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ layout button ਨੂੰ click ਕਰਕੇ slides group ਦੇ ਅੰਦਰ home tab ਦੇ ਵਿੱਚ अपना desired layout select कर सकते हैं। किमें that will just see home tab ਦੇ ਵਿੱਚ slides group ਦੇ ਅੰਦਰ layout button ਨੂੰ click कर सकते हैं। देखो home tab ਦੇ ਵਿੱਚ slides group ਦੇ ਅੰਦਰ layout button ਨੂੰ click करके ਉਹ ਜਿਹੜਾ blank page ਸੀਗਾ blank slide ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ slide ਲੈ ਲਓ, scheme ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ scheme ਚੱਕ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ text ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੁਝ picture ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਟੈਕਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਡਰਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਿਕਚਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਆਊਟ ਹੋਮ ਟੈਬ ਚੋਂ ਸਲਾਈਡਸ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਲੇਆਊਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਆਊਟ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬਲੈਂਕ ਸਕਰੀਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਲੈਂਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ built-in templates भी ले सकते हैं। built-in template की होता है, just read what's written on the screen। Office 2010 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ auto content wizard ਦਾ option है नहीं, simply कुछ templates ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ template select ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ template ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? It gives you an initial foundation to build a presentation। एक starting foundation दे दिंदी है अपनी presentation बनाने के लिए। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ text है या design है template ਦਾ उसਨੂੰ modify कर सकते हैं, pictures add कर सकते हैं, sounds, company ਦਾ logo add कर सकते हैं ਤੇ ਨਾਲੇ delete भी कर सकते हैं कुछ existing content of the template। so templates कुछ built-in slides में या slide का base है जिन्होंने ਅਸੀਂ सिलेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट ਨੂੰ मैच करा सकते हैं। क्या उन्होंने मॉडिफाई किया जा सकता है, उन्होंने विच एज आई जस्ट सेड टेक्स्ट उन्होंने डिजाइन चेंज किया जा सकता है, पिक्चर्स, साउंड, कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं फिर कोई स्टाइल होगा पार्ट होगा कंपोनेंट या कोई कंटेंट होगा डिलीट भी कर सकते हैं। See, this is how we create a presentation using built-in templates। so यही होम ऑफिस बटन क्लिक करके न्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲੈਂਕ ਸਕਰੀਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਸੈਂਪਲ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਐਂਡ ਥੀਮਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੱਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਟ ਇਨ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਥੀਮਸ। ਥੀਮਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਲਾਈਡ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੈਟਅਪ ਤੇ ਥੀਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। How is that? What is it? Let's just see that. Applying themes. So what are themes? Themes are the sets of pre-designed formats that include text, layouts, background, and other color schemes
etc., that can be applied to any presentation to give it a professional look. एक बहुत professional, एक बेहतरीन look देने ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ pre-designed formats ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ text ਹੁੰਦਾ ਹੈ, layouts ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, background ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है, images ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, text ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, color schemes ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ color ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ settings ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ pre-designed formats जिन्हां नूं themes किया जाता है। तो जो जब आप थीम अप्लाई कर देंगे तो बहुत प्रोफेशनल एक पूरी हाई-फाई जी लुक आ जाती है साडी presentation में। So I suggest you all must apply these themes once you learn about it. So किवें असीं करदे हां themes, click on the design tab, पहला home tab की गल कीती सी असीं, हुण असीं design tab की गल कर रहे हां। So design tab click करना है, under the themes group scroll the mouse over the available thumbnail of themes। कई सारियां themes पईयां होंदियां ने, छोटे 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 पिक्चर्स होंदे हैं, उन्हां पिक्चर्स नूं thumbnails कह दिंदे हैं। वो themes group दे विच पए होंदे हैं, माउस ओदे उत्ते स्क्रॉल करो ते तुहानूं नाल नाल ओदा डिस्प्ले जिहड़ा तुहाडा कंटेंट बनिया होया नीचे ओदा डिस्प्ले आंदा रहिंदा है, दिखदा रहिंदा है, जिहड़ा जचे तुसीं ओह यूज कर सकते हो, ओनू क्लिक कर लो ते ओह अप्लाई हो जाता है। सो या तो ये हो गया themes group दे विच माउस स्क्रॉल कर लो, या फिर to view more themes, click on the more drop-down menu at the bottom right of the themes group. This will open the themes gallery. दस कुत्ता बेटे सामने नजर आ जाते हैं, जो होर ज़्यादा देख रहे हैं तो राइट साइड पे more दी ऑप्शन हुई है drop-down menu, उन्हें क्लिक करके काफी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर 25-30 ऑप्शंस आ जाते हैं, उन्हें चो असीं सिलेक्ट कर सकते हैं। Select the desired theme type. You will get the selected theme on the slide. So सानू सही theme जी वो select करके असीं उसनू use कर सकते हैं। So let's see how that happens. और design है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ themes ਦੀ option ਸੀ, themes जो ਅਸੀਂ थोड़ी ਜਿਹੀ देख सकते ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ slide करके more option ਉਹਦੇ नीचे right corner ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ click करके ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ themes ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਾਊਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲਸ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਪਿਕਚਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਥੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੇਆਊਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਊਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि केड़ी थीम असी अप्लाई करनी है अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। सो ये बड़ी प्रोफेशनल जी लुक दे देता है। After selecting a template, selecting a theme, now we talk about changing the color scheme. So color scheme भी असी अपनी मर्जी नाल change कर सकते हैं। वो क्यों होता है? Every presentation comes with a color scheme. You can change the color scheme of the complete presentation or a single slide. सारियां नु इकट्ठा भी चेंज कर सकते हो स्कीम, कलर स्कीम, या फिर एक एक करके वक्ता दे सकते हो कलर स्कीम अलग अलग पेजेस में। The colors of specific elements on the slide such as title, background can also be changed. So अलग अलग चीजों का असी कलर स्कीम बदल सकते हैं। How is that done? कलर स्कीम किमें हुंदा है? Open any slide of a presentation. Click on the design tab. You will find a gallery of different themes in the themes group. Preview the effect of any theme before selecting it for your slide by hovering the mouse over it. Mouse ओदे उत्ते घुमाओगे, तुसी हिलाओगे तां तुहानू किहड़ी थीम दा की कलर हैगा ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ प्रेजेंटेशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ इफेक्ट नजर आएगा। नाले तो थंबनेल ਦੇ ਉੱਤੇ नजर आंदा है, नाले जो थोड़ा डेटा लिखा हुआ है कंटेंट ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ नजर आ जाता है। Right click on the selected theme, the shortcut menu appears. Select the set as default theme option. The theme will be applied to all the slides. So ਅਸੀਂ right click करके अपनी ਜਿਹੜੀ theme ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੋ set as default theme ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, shortcut menu ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ slides ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ theme apply हो जाता है। किवें हुंदा है let's see here, इत्थे डिजाइन दे विच आउगी ऑप्शन, but let's just continue and complete the content right up first. Click on the colors button and select the desired color scheme from the drop down menu। इत्थे पहला ये theme है,
इन्होंने सिलेक्ट करके कोई ना कोई थीम सिलेक्ट कर ली, उन्होंने राइट क्लिक करके अप्लाई कर दिता सेट एज डिफॉल्ट, तो वो थीम डिफॉल्ट होगी सिलेक्ट। फिर उसके बाद कलर की ऑप्शन आती है, इतने कह देंगे कलर बटन में क्लिक करो, इतने ड्रॉप डाउन अपीयर हो जाएगा, वो चो जेडी भी कलर हम जचिया वो कलर तुसी सिलेक्ट कर सकते हो। To apply the color scheme to all the slides, right click on the color scheme and select the apply to all slides option। जो कलर तुसी इत्थे सिलेक्ट करोगे इन्हें क्लिक करने तो बाद उस तो बाद इत्थे जेड़ा कंटेंट आता है उसे राइट क्लिक करके अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स ऑप्शन देनी है, फिर उस सारे स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। In case you want to apply color scheme only to the selected slide, जिन्हें इको स्लाइड में देना है तो तुसी सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स, कि वो भी ऑप्शन आ जाती है, उन्हें तुसी अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स भी कर सकते हो। फिर कलर स्कीम के बाद देखो कलर स्कीम से फॉन्ट सेमी इफेक्ट्स है, फिर बैकग्राउंड स्टाइल्स है, बैकग्राउंड की आप गल करिए हुन चेंजिंग बैकग्राउंड कलर। You can change the background color, pattern and texture of a slide by this system। एक क्या होता है format background option है ये। See, click on the background styles button present in the background group on the design tab। अब देखो और design tab है और theme सी गया उस तो अगे background group है, background group दे विच background styles option आ पई है, उतो तुसी बैकग्राउंड स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो अपनी बैकग्राउंड ग्रुप ऑप्शन इन डिजाइन टैब जो। A list of options will be displayed as you move the mouse over the background style which is reflected on the slide। Select the required background and it will be applied। Click on the format background option of the background styles button। The format background dialog box will appear। Click on the fill tab and select any fill style option। So इन्हां विचों कोई भी स्टाइल सॉलिड फिल है या ग्रेडिएंट कोई टेक्सचर फिल है वो सारा तुसी इन्हां चों ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, केड़ा कलर करना है वो देख लो, ट्रांसपेरेंट भी बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट लिखा नजर आवे या ना नजर आवे, ठीक है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ भी नजर आवे ट्रांसपेरेंसी वो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ सेट कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल क्लोज ये सिस्टम होता है। देखो ਜਿਹੜੀ कलर स्कीम सी वो कलर सिलेक्ट किया ਉਹਦੀ ट्रांसपेरेंसी देखी कितनी रखनी है, ਜਿਹੜਾ भी कलर सिलेक्ट किया तो देखो click on the color drop down arrow if you want to select different color part from the displayed color select on more colors option। उसके बाद इत्थे जे ये जज कर ठीक है नहीं तो कस्टम दे विच more colors आ जांदे हैं उन्हां चों तुसीं होर सिलेक्ट कर सकते हो। The color dialog box appears as shown in this figure। Click on the standard tab and choose the color you want। Accordingly तुसीं color अपना format background dialog box के विच apply to all button click करके फिर close करके apply कर सकते हो। So वो color background दे विच आ जाएगा। फिर स्मार्ट आर्ट एक फीचर होता है पावरपॉइंट के अंदर। स्मार्ट आर्ट भी बहुत अच्छा है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टेक्स्ट बड़े स्टाइलिश तरीके नाल डिस्प्ले होता है। So let's see what smart art is। Smart art is a graphics tool that allows you to present data or information visually in the form of pyramids, diagrams, matrix, etc. These graphics help in conveying our ideas and messages easily and effectively। It contains a variety of graphical layouts and diagrams to display data in the presentation। So एक किਵੇਂ करते हैं, select a slide from the slides pane where you wish to insert the smart art। पहला से slide select करेंगे, फिर click on the insert tab, select the smart art button in the illustrations group। So insert tab के अंदर smart art button चुनना है illustrations group चो। Choose a smart art graphic gallery is displayed। So ये gallery display हो जाती है। Select the type of smart art, example hierarchy option हैगी है, फिर तुसी choose organizational chart ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ राइट साइड पे उसको क्लिक करके ओके करके सिलेक्ट कर सकते हो। जिवें आ देखो आ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक चक्की इन्हां विचों हायरार्की चक ली, हायरार्की दे विच आ सारी ऑप्शंस आ गईयां, इन्हां विचों जेहड़ी तुहाडी इच्छा होवे
ਉਹ ਤੁਸੀਂ select ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ okay click ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So a blank organizational chart which will get inserted on the slide is picture the examiner. So the design and format tabs appear under the smart art tool. The design and format tabs activate हो जाते हैं। फिर उन्हें विचों ਅਸੀਂ design के format होगा इस picture का इस style का बदल सकते हैं। ये menu ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ design and format tabs, ठीक है? ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ click करके text ਨੂੰ modify कर सकते हैं। Now click inside a box in the smart art graphic and click to add a text on it. Add text at different levels and delete the unwanted boxes by clicking on the box and pressing delete. Under by default click delete button remove. So koi sari settings after we've selected a format ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ requirement ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। So that's about it for today. I hope you've enjoyed this lecture. So thank you, Shukriya, and hope that you will all meet again tomorrow when we will discuss further other features of Microsoft PowerPoint. In the meantime, don't forget, if you want to have a recap of what we've learned today, you can go to the official YouTube channel of the college, which is Bibi Sharan Kaur Khalsa College, Chamkaur Sahib, Sri Chamkaur Sahib, wherein you will get all these videos uploaded on our official YouTube channel. You can subscribe to it and listen to the videos, watch the videos, and also leave your valuable comments on it. Thank you so much and goodbye. Have a nice day and wish you happy learning always.